Good morning students, welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we will start with the appointment part of the directors. So appointment of directors agare ame gote jinse janlu qualifications kona disqualifications kona. Ebe once gote director eligible hi jouchi ta pakhare eligible qualities achi ame ebe dekhiya tara appointment procedure ta kemiti hochi. The appointment of directors can take place in multiple ways. In multiple ways. Hello, माने बहुत किछि वेज ही पारिबो सेटा की the minimum number of directors has been laid down under section 149(1) of the Companies Act. Maximum directors केते कहै मैम टिके स्लो the maximum directors केते कहै छी मु directors maximum directors 15 सब वर्ड आ minimum directors public रे 3 हां private 2 1 एबे वॉइस क्लियर अछि ठीक अछि मते लाइक ऑनलाइन स्टूडेंट्स एथरे जाने पारे हां ठीक अछि थैंक यू देखो धीरे जाउची. This section provides that every company shall have board of directors consisting of individuals as directors. आमे ऑलरेडी लिखि देथिले एबे अंडरलाइन करछु. Individuals as directors माने कोन? Only individuals माने गोटे ह्यूमन बीइंग आगा डायरेक्टर हे पारिबो and shall have minimum of 3 directors in case of public company, 2 directors in case of private company and 1 director in case of OPC and maximum of 15 directors. कितने जन रहे maximum 15 directors. However, a company may appoint more than 15 directors after passing a special resolution. केमिति से appoint कर परियो? By passing special resolution. Special resolution रो meaning कोन? Special resolution रो meaning कहिथिली? Maximum majority, approximately maximum majority. केते परसेंट कहिथिली? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आंसर करि परिए. केते परसेंटेज कहिथिली? 75 मैम 75. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आंसर इन द ग्रुप हैला 75%. ठीक अछि? ओके 75%. In addition to the aforementioned, certain class of companies may be prescribed to have at least one woman directors. आमे गुटे जिंस पढथिलु केते उडा कंपनी अछि जोडा किछि क्राइटेरिया मैच करि देले we must appoint at least one woman director. गुटे woman director तो बाध्य होइगी हम कोन अपॉइंट करिबाबू पडिबो. Appointment of directors can happen when first directors are appointed to the company, when directors are appointed at a general meeting, when directors are appointed by the board of directors, when a resident director is appointed and when independent directors are appointed. तो से कोन कहउछि एजा सब होछि प्रोसीजर्स माने कोन के केमिति टाइप ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करछन्दी के को प्रकार कंपनी अपॉइंट करि परियो केमिति अपॉइंट करि परियो केमिति टाइप ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करि परियो सब जिंसर गुटे ओवरऑल आइडिया देछि. So when independent directors are appointed, board of directors can appoint additional directors, alternate directors, nominee directors and can even fill up casual vacancies. तो के करि परिए एजा सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करि परिए. तो हमर गुटे गुटे डायरेक्टर रो क्राइटेरिया गुटे गुटे प्रकार रहिबो. तो से कोन कहय चाहछि अल्टीमेटली तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स जहां भी अछि सेडा कोन हला बडे कोनसी उडे कॉमन टॉपिक नै गुटे गुटे डायरेक्टर गुटे गुटे प्रकार रे अपॉइंट हे पारे. इज इट क्लियर और नॉट? ओके थैंक यू. जार किछि भी डाउट अछि प्लीज पुट अ मेसेज सेथे तमे टेक्स्ट करि परियो सेडा मो एड्रेस कर देबे एडी. ओके ओके देखो रिटायरमेंट एंड रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स. If the articles of association provided for retirement of all directors in the annual general meeting, then all the directors are liable to retire. Liable to directors retire. लिखो liable to retire. तो से कौन कहूची
ए पावर टा का पाखरे अछि ए पाखरे लेखो if AOA if AOA provided for or mentioned that all directors must retire in the AGM then every director is bound to retire is bound to retire. ओके ठीक अछि देखो एटार सिंपलर थिंग ता देखो एडी if article of association provided for or mentioned that all directors must retire in the annual general meeting then every director is bound to retire जदि से डायरेक्टली कहि दउची कि एनुअल जनरल मीटिंग रे समस्त को रिटायर करियर अछि तो समस्त रिटायर करि देबे विदाउट एनी हेसिटेशन निद लागिले रिटायर कर हैला according to section 152(6) of the Companies Act 2013 2/3 of the total number of directors are liable to retire by rotation and those directors are called retiring directors. So please write down retiring directors. माने बूढ़ा directors नहीं भल्ला आगा retiring directors एथरे कौन होची से कोची 2/3 of total number of directors 2/3 of total number of directors liable or must retire केमिति रिटायर करबे बाय रोटेशन माने तांगर गोटे ऑर्डर थिबो को ऑर्डर रे ताके जॉइन हेथिबे कि सीरियल नंबर थिबो कि जहां भी क्राइटेरिया कंपनी सेट मेंशन करछि किबा कंपनी मेंशन करछि ताके कोन करिए 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स माने केमिति जदि 15 डायरेक्टर्स अछंदी तो रिटायरिंग डायरेक्टर्स केत जणा हेबे आंसर मी रिटायरिंग डायरेक्टर्स केत जणा हेबे आगे 10 जणा हेबे बुझि पाला केमिति ना 2/3 into 15 तो एथरे जो 15 जण अछंदी तो फर्स्ट 10 पीपल जे भी अछंदी से माने रिटायर करिवे रोटेशन प्रोसीजर रे तापरे आसीबे से 5 जण जेतोड़ नेक्स्ट मीटिंग हबो बुझि पाला इज इट क्लियर बुझला हां ठीक अछि कोन सेटा 2/3 टा होची रिटायरिंग डायरेक्टर्स तापरे कहूची out of the retiring directors 2/3 of the total number of directors 1/3 of the directors is liable to vacate the office माने कोन
खाली करेंगे. The directors who were in the office for the longer period is liable to retire first. However, if the two or more directors have been appointed on the same day, then directors will retire based on mutual understanding between them, and when mutual understanding is not available, then they will retire based on draw by lots. Lottery method. बुझिपाल एडार मु गोटे केस ला क्वेश्चन सॉल्व करेबी सेथिरे तमरो पूरा सबजा जिंस क्लियर हबो तमे खाली से 2/3 नंबर टा मेंशन करी बोले मन रखिथिबो कंफ्यूज हबन काहेकि आर्थरे मु जेतळ को बिल्स ऑफ एक्सचेंज बुझौथिली मते के पचरलानी किछि जिंस सेथिरे अनक्लैरिफाइड रहला बुझिला ना तो मु भी रियलाइज करली कोन कि एग्जांपल सहित जेतळ हम डिस्कस करबो तो दैट वुड बी बेटर तो मु स्कैनर क्वेश्चन रो गोटे एग्जाम क्वेश्चन बाहर करी जेतळ को हम रोटेशन कांसेप्ट टा डिस्कस करबे बर्तमान को जस्ट रिमेंबर कि 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स आर ऑलवेज रिटायरिंग डायरेक्टर्स देखो इतरे से कही देला कि जदि दीटा किंबा तीनटा डायरेक्टर्स को जदि से वेकेशन जिनसडा आसुची तो से माने कोन करी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किंबा लॉट्स मेथड रे ये करबे तो विल डिस्कस अ डिटेल्ड एग्जांपल तापर देखो unless the articles provide otherwise for retirement of all directors at every general meeting not less than 2/3 of the total number of directors excluding independent directors whether appointed under this act or under any other law of a public company shall be persons whose period of office is liable to determination by retirement of directors by rotation and same as otherwise expressed provided in this act be appointed by the company in general meeting. The remaining directors in case of public company shall be appointed as per provisions and where a director retires by rotation at the annual general meeting of the company at the same meeting may appoint the retiring director or some other person in the vacancy. खाली last point टा important mark करो ए सब जार चार्ट टा मुझे बनौछि लास्ट पॉइंट से कौन कहछ देखो एजीएम रे जेतळ को रोटेशन प्रोसीजर रे डायरेक्टर माने कौन होचंदी रिटायर करूचंदी तो सेम मीटिंग रे से कौन रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट भी करि परिबो कंपनी चाहिए रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट करि परिबो किंबा से कैजुअल वैकेंसी ना फिल अप करि परिबो को मीटिंग रे एनुअल जनरल मीटिंग एति की जिंसो रेलेवेंट फॉर इंटर पर्सपेक्टिव बट फाइनल पर्सपेक्टिव पे पूरा जिंसोडा रेलेवेंट स्टिल हम दीडा जे जिंसो डिस्कस करें तो प्लीज राइट डाउन द चार्ट किछि डाउट अछि पचारि पारिए ओके फाइन तो देखियो कहिथिली कोन पे होछ लेखो एडी रोटेशन रे तमरो आरटीपी क्वेश्चन कोन कोन आस्थिला देखुथिली हैला से भितर जोडा दरकार सेडा लेखोछि लेखो आरटीपी क्वेश्चंस रोटेशन प्रोसीजर रे according to companies act
directors in public company, directors in public company must retire by rotation, must retire by rotation, must retire by rotation, must retire by rotation, and at least 2/3 of the total directors, 2/3 of total directors, 2/3 of total directors are liable, 2/3 of total directors are liable to retire. बुझिपाल? तो सेकंड जिंस से कोन क्लैरिटी देबा चाहछ को एट एजीएम जेतरो को एजीएम हबो वंस एजीएम हेला को केते जा डायरेक्टर्स रिटायर हे परबे से कहूची जनरली गुटे कंपनी रो 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन मो जहा भी कहूची प्रोविजन हॉल से बुझन नले कंफ्यूज हे जिवो 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स लायबल बाय रोटेशन माने केतरा 10 टा हम केस रे से कहूची एजीएम रे 1/3 of the directors are retired हे परबे by rotation काहे समस्त जदी गुथरे पळेबे तो प्रॉब्लम हबो अपॉइंट करिया पे तो सीए कोन कहू जानछ ना एट एजीएम एडा होछ तमरा सेकंड पॉइंट एट एजीएम 1/3 of the 1/3 of the 1/3 of the directors 1/3 of the directors liable to retire by rotation must retire माने से कौन कोच जान ना 10 रो 1/3 केते हला 3 पॉइंट केते 5 होची तो 3.5 ना केते होची 10 by 3 3.3 होची तो खाली 3 नेबा तो 3 जण आगा रिटायर करि परबे बुझी पालो ना से 2/3 एंड 1/3 कोन पे कहला सेंटेंस टा ब्रेक कर लेबे मो एग्जांपल टा लिखेबी तळे मो स्लो कोन पे जाउ छी एडी कंफ्यूज हबो से को होई छी कंपनी सेट कोइ छी टोटल डायरेक्टर्स हमर केते हमें 15 नेलु 15 डायरेक्टर्स हमर टोटल अछंदी हैला तळे आगे लिखि दियो एग्जांपल रफली लिखो टोटल डायरेक्टर्स हमर अछंदी के जण 15 हेले रोटेशनल डायरेक्टर्स के जण छे रोटेशनल डायरेक्टर्स is equal to 2/3 into 15 के जण 10 जण तो एडी से कोन कहू जानछ ना डायरेक्टर्स who can retire in the AGM के जण रिटायर हे पारे 1/3 into 10 3.3 or 3 एबे बुझिला is it clear or not directors who are liable to rotate माने retire by rotation सेमानंगर 1/3 होची कोन एजीएम रे रिटायर हे पारे बुझि पाला is it clear please confirm करो काहेकि टिके कॉस्ट प्रोविजन ना ओके थैंक यू देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बुझले तुम जाटणो क्लियर ना आ बाकी जतळ माने से कहूची एजीएम रे एत्ती गागा हेई पारे समस्त गुथरे जाय पारे आ बाकी प्रोविजन से किछि कहनी के किमिति तापर लिखो नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट the directors who have been longest
directors who have been longest in the office, longest in the office, very good, longest in the office shall retire first, shall retire first, माने को ऑर्डर रे डिसेंडिंग ऑर्डर रे जी अधिक रहले सी फर्स्ट पड़े, जी अधिक खाइले सी आगे बिल दब, मेरे ए रूल ले करले भलो अब कॉमर्स ज्ञान पे ट्रेडिशनल। अच्छा देखो, filling the vacancies, filling the vacancies, filling the vacancies से कौन बोलते हैं at AGM, at AGM सुनो साथी के टिके तो पढ़ौची आ कौन तीनटा लाइन पढ़िलेनी एबे जे at AGM when a director, at AGM when a director retires, when a director retires, the company shall appoint, the company shall appoint either the retiring director himself, either the retiring director himself or anyone else, or anyone else से कौन कोची रिटायरिंग डायरेक्टर पड़े लाखु जदी बेसी दुख लाउची ये छाडी रही पारनी तो से डायरेक्टर को कौन करियो रीअपॉइंट करियो पळे कहयोनी म रीअपॉइंट करियो नाले कोन जदी हां पळा जा पळा खाली कहयाली कहले आ जणो का ओडे अपॉइंट करियो। इज इट क्लियर? बुझला ना समस्त को? I hope it's clear. देखो लिखु चोगी लिखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स किछि डाउट अछि especially the first and second points question mandatorily आसीबो आरटीपी क्वेश्चन रु लिखि छि प्रोविजंस किछि डाउट अछि कहि परियो नहीं डायरेक्टर्स रो डिस्क्वालिफिकेशन रे कहि दे थांदा ना नले तो रहिबो सेटा बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कंपनी जहां प्रिस्क्राइब करि परला कंपनी जहां प्रिस्क्राइब करि परला हैला लेखिलो सबो कोन चिंगुडी वाला होजो देखो रेजिग्नेशन अ डायरेक्टर में resign from his office by giving a notice in writing जदि ताको बेसी बिजार लाला कोन करियो नोटिस दे देबो लेखिकी मो रिजाइन करि दउची as per the section 168(1) of the Companies Act on receipt of such notice the board shall take note of the same and the company shall intimate the registrar in such manner within such time and such form as may be prescribed and shall also place the fact of resignation in the report of directors laid in the immediately following general meeting by the company. So please write down resignation. Resignation रे से कौन कहला डायरेक्टर shall give कौन दबो notice in writing to कागो company को notice
person writing to company. Company का join first registrar of companies, registrar of company तार डाक्टर ना आरसी registrar of company को जणेबो आउ काहा को जणेबो कहै से देखो से कहै छी fact of the resignation जहा भी अछि सेटा कोन करियो सी fact of such resignation रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर से जणेबो काहेकि समस्त जानिबा दरकार ना कि कोन पे से रिजाइन करला बुझि पालो ना क्लास वाला in form prescribed within time limit. Facts of resignation. Facts of resignation in director's report. In director's report. Facts of resignation in director's report. Facts of resignation in director's report. केतळको immediate general meeting. Immediate general meeting. Immediate general meeting. एडा हबो हमर फर्स्ट एडा हबो सेकंड फर्स्ट रजिस्टर के कंपनीज को जणेबो तापरे का जणेबो तापरे को जणेबो आ इंपोर्टेंट थिंग हो छ हमर जनरल मीटिंग रे जणेबो बुझिलो सबो एडा होचे कोन हमर रेजिग्नेशन तू कोन ना मते काढ दो मु आ रिजाइन कर दो बुझि पाला लिखले सबो स्नेह okay. The director may also forward a copy of his resignation along with the detailed reasons for the resignation to the registrar within 30 days of resignation in such manner as may be prescribed. Next point से कौन कहला देखो next point से कहला कि forward a copy of resignation to with detailed reasons हैला इनदी मते इच्छा नहीं मु जीबिनी दूर ही होच इनदी reasons नहीं detailed reasons बुझेबो for the resignation to the registrar within 30 days of resignation in such manner as may be prescribed. The second point कौन है डी डायरेक्टर जे भी अछि से कौन करिया डायरेक्टर अब नहीं नहीं एते झिरमिरी दिवाली दरकार नहीं हम हाँ होली हेला within केते दिन 30 days तेरा 50 हेला दे within 30 days forward कौन दबो जे copy of resignation plus copy of resignation plus detailed reasons for resignation. Detailed reasons for resignation. Detailed reasons for resignation. किए दबो जे डायरेक्टर दबो कंपनी में आरसी के जणियार अछि डायरेक्टर भी जणियार अछि बुझिला ना इनदी कोन ग्रुप रे जदी बेस्ट फ्रेंड जण अछि रे हैला ना तार कोन पार्टी होची तो ग्रुप रे गुड थरे कहया आ तुम फोन करी गुड थरे कहया ना नहीं ग्रुप रे कहि दिछि आ थरे कहि ना कोन आली कहले हबगी हबनी ना स्पेशली जितळ बाहागर टाइम रे बुडा उडी जाथु थाउ चंदी हैला से मन कोन ग्रुप रे गुड थरे फोन करी गुड थरे होरु जे गुड थरे बाहागर आग दिन गुड थरे चार थरे कहले जाई हां आउ थरे जाई आने पड़ियो बुझिला तो से बुडा उडी जा सब होछ ना पर आरसी रजिस्टर ऑफ द कंपनीज बुझि पाला
एटा होची कथा नाइ डाकियो निसिए पाठ पढाबे बाहागुरु डाकियो The resignation of the director shall take effect from the important from the date on which the notice is received by the company or the date, if any, specified by the director in the notice, whichever is later. Important mark. So resign कहि कि हमें केबड कहि परिया फर्स्ट थिंग होची जेतलो नोटिस ता कंपनी रिसीव करला से दिन रु किंबा जदि डायरेक्टर कहि मु नवंबर 15 रु आसीबिनी तो नवंबर 15 whichever is later बुझि पार. However, under section 168(2) of the Companies Act, the director who has resigned shall be liable even after his resignation for the offences which occurred during his tenure. किला काम कर देगी रिजाइन कर देले मते के पचरियनी कहले हबनी. Even if you have resigned, you are liable for kilas. Okay? Hey. Lekho sabo shall be effective from कौन दीटा जिनस से कहिछ date on which company receives notice or date mentioned by the resigning director if any whichever is later. मो कंपनी को देली 10 तारीख रे 10/11/24 मेंशन करछि 15/11/24 केबो लेटर जोड़ा माने कोन मु कोइ आंसर पर जोड़ा आंसर को लेटर कहूची पर कहूची बाद में तरवाता चारटा लैंग्वेज सरला हां 2 minutes later you can wait or call you later koi pariyan. So date of resignation shall be 15/11/2024 15/11/2024 मु रिजाइन करी पळै जद हबो पिल्ला नळ्या होच बुझुची ना नहीं एटा देखो क्लास टा कट होची फिर भी बच्चर छिमो तो रेस्पोंड करियो सबु हैला हां हिला देखो in Saumil Dilip Mehta versus State of Maharashtra, it was held that a director can resign just by sending in writing a letter informing either chairman or secretary of the company his intention to resign from post of directors of the said company. तो एटा important mark करो जे तो एटा हाई कोर्ट डिसीजन देछि हैला कोर्ट डिसीजन देछि तो एटा पचरी पारिबो तो से कोन कहूची डायरेक्टर केमति रिजाइन करि पारियो ना से इन्फॉर्म करि पारियो लेटर रे का कागो चेयरमैन और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी his intention to resign from post of director of the said company. He can tender his resignation unilaterally without sending a notice to the registrar of the companies. हेले से केस रे कोन हितिला से नोटिस टा सेंड करनी खाली एमन दिजन रो चेयरमैन किबा सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी को से इंटेंशन कहि देछि जेहेतु तो कोन हबो रजिस्टर ऑफ द कंपनीज को न कहले भी चलछ. अरे देखो जनरल केसेस रे आमे जे तो कथा बा कोन से कहूची रिजिग्नेशन जने करछन हेले से बहुत रागी की रिजाइन करियो ना कोन सरदार रिजाइन करियो रागी की रिजाइन करथियो आ से टाइम रे तमे कहयो कि आकु दबो ताकु दबो डेट ऑफ रेजिग्नेशन ता कहयो आरसी को दबो टाइम भितर दबो वाली कहले से सुनेयोगी सुनेबन तो रियल लाइफ सिनेरियो कोन हला इधर चेयरमैन किमा सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी कागु जण को इन्फॉर्म कर देले से रेजिग्नेशन ता वैलिड हला तापर से कहूची it was held that once a resignation letter is submitted to the board
The date on which the intention to relinquish post is communicated to board would be the date from which the director ceases to be a director of the company. पूरा पूरी सब जगह important. किंतु contradict होचे देखा एडे लेखा से गोटे जिनस कहला जदि डायरेक्टर resigning director informs का बोलते chairman or secretary of the company or कोई से दिजन जागो नहीं chairman or secretary of the company, then it is said to be communicated, and no need to inform ROC again. एटा कौन हाई कोर्ट जजमेंट प्रोविजन टा सेटा कोच कौन है रे नो नीड टू इन्फॉर्म ROC अगेन माने इनफॉर्मली मु लिखुची रफली नो नीड टू इन्फॉर्म ROC अगेन. तो एडी से कहूची कौन नेक्स्ट पॉइंट रे the date on which intention to resign has been communicated to the board. Intention to resign has been communicated to board of directors shall be the date from which he ceases to be ceases माने कौन stops ceases to be the director of the company. Okay. नहीं सेडा रेजिग्नेशन काउंट होबनी से कहि पुरा लेटर टा दबो किमा इंटेंशन टा जणे देलानी आसला नेले फोन करी पचारिए कोन हेछि कोन बंजिछु ना मरछु ना कोन हैला जदी ताको कहिए तते सतरे जदी इच्छा नहीं तो यू हैव टू गिव अ रेजिग्नेशन लेटर तू बंद करि दे पछे रेजिग्नेशन लेटर टा बाध्य सबमिट करिया पे देखो मोडी कहूची सीए देखो एग्जांपल टा बुझिबो लेखिबो नले एटा बुझि पारियो एग्जांपल रे से कहूची लेटर जहा भी अछि लेटर से देला 10th नवंबर को पहुंचिला रीच्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 12th कम्युनिकेट हैला 13th को सी मेंशन करची मेंशन्ड डेट ऑफ रेजिग्नेशन 15 तारीख मेंशन डेट ऑफ रेजिग्नेशन 15 mentioned date of resignation is 15th November. तो से को दिन रो डायरेक्टर नाइ एली काउंट होबो मते को फर्स्ट क्वेश्चन भल से भाबी की को
ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई नीड योर आंसर हैला समस्त कहि ग्रुप रे from which day onwards question सुनो from which day onwards the director will be ceased to be a director of the company quick कौन कहछ 15 आंसर दियो सब भल से पढ़ी के देना आंसर टा very good the answer is 13th November सूरज very good सूरज ने किए चिंकी चिंकी very good देखो 13th November 13th November कौन पे मो एबे लिखेली सेडी लिखेजी कौन लिखेजी मो date on which the intention to resign has been communicated to the board of directors date from which he ceases to stop the director of the company तो कौन जो दिन से जिनसडा कम्युनिकेट हैला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को से दिन रो से कौन हबो डायरेक्टर हेबारो सीज कर देबो डायरेक्टर हेबारो स्टॉप कर देबो बुझी पारला ना नहीं हैला कौन हबनी सी आउ हैला तो आंसर इज 13 नवंबर तर एक्चुअली रेजिग्नेशन दा इफेक्टिव केबडो हबो रेजिग्नेशन दा इफेक्टिव केबडो हबो सुन चला नहीं रेजिग्नेशन केबडो इफेक्टिव हबो 15 रो कौन पे 15 रो हबो जे तुसी नहीं वेरी गुड मेंशन करछि गुटे एंड लेटर देछि दीडा जारू लेटर गुटे प्रोविजन भितर जेतोळे मु एडा पढिली संगे संगे जेतोळे आंसर देई पारनो तो कोन हबो कंपनी सेक्टर हजि जियोनी हां बुझिला ना नहीं कौन पे मु स्लो जाउ जियो हैला तो एडा होछि हमरो देखो एडा होछि हमरो कोन date from which he seeks a director he seeks to be a director अब एडा कोन date of effective resignation date of effective resignation before it is all date of effective resignation तापर देखो in Mother Care India Limited versus Professor Ramaswamy Iyer it was held that once a resignation letter is submitted to the board the date on which intention to relinquish होछि हमरो law language relinquish माने कोन ceases to माने cut off relinquish post is communicated to the board would be the date from which the director ceases to be a director of the company बुझि पालो एते स्लो जिबर कोन रीजन हला तमे जदि बुझि पारनो बुझिला तो एबे बुझिला नहीं बुझिला हां रिमूवल देखो डायरेक्टर्स कैन either be removed by shareholders or by tribunal like shareholders or tribunal national company law tribunal government सेडा येडा under section 169 of the companies act shareholders have been given the inherent right to remove the directors appointed by them underline करो inherent right माने कोन inherent right माने जन्म हक जो कोन जन्म हक जन्म रु तार हक थाउच जन्म कोन जन्मदत्त अधिकार ठीक अछि तो जहां भी तार हक अछि inherent right to remove the directors appointed by them it's not necessary that there should be a proof of mismanagement breach of trust misfeasance or other misconduct on the part of the directors तो से जरूरी नहीं कि किछि प्रूफ सबमिट करिए शेयर होल्डर्स यदि चाहिले गुटे डायरेक्टर को रिमूव करि परिबे बट द शेयर होल्डर feel the policies pursued by directors or any of them are not to their liking they have the option to remove the directors by passing what an ordinary resolution in the same way as they have the right to appoint directors by passing ordinary resolution तो लिखो removal removal से कौन पड़े छै tan removal नहीं
So directors can be removed. Directors can be by shareholders or tribunal or tribunal. By ordinary resolution without any proof. Without any proof. Without any proof. Without any proof. A company may, by ordinary resolution, remove a director not being a director appointed by the tribunal under Section 242 before the expiry of the period of office after giving him a reasonable opportunity of being heard. Tribunal যদি remove করতে opportunity দেয়, right? Company can remove directors other than director who is appointed by tribunal. ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ ଅଫିସର ଅଛି, ସିନିୟର ଅଫିସର ଅଛି କି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛି, ସିଏ ଜଣ ଯଦି ଆପଏଣ୍ଟ କରିକି ରଖିଛି ତ କିଏ ଡେयर କରିବ କି ତାକୁ ରିମୁଭ କରିବା ପାଇଁ? ଇଜିଲି ଡେयर କରିପାରିବ କି? ନାଇଁ। ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲ ଆଗ ତାକୁ ରିମୁଭ କରିବ ନା ନାଇଁ? ଦେଖ, ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲ ଚାହିଁଲେ ନର୍ମାଲ ଡିରେକ୍ଟରକୁ ରିମୁଭ କରିଦେଇ ପାରେ। ट्राइब्यूनल जाको अपॉइंट करछि ना, शेयर होल्डर्स भी रिमूव करि परियनी, कंपनी भी रिमूव करि परियनी, अगेन ट्राइब्यूनल आगा रिमूव करि परियो। ए पॉइंट मन रख। Can remove directors other than director who is appointed by tribunal by giving him a word of mouth, by giving him reasonable opportunity of being heard. माने ताको explanation देबा में हमें कोन opportunity देबा, reasonable opportunity of being heard. 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 बुझी पाला? Reasonable opportunity of being heard. तो ठीक बोलते हैं तापर से कहला the vacancy is created under this section after the removal of the director, then in the same meeting of the removal another director is being appointed for the time being and a special notice of the intended appointment is to be provided. तो से कौन कहूची vacancy जदि हे जोची सेम मीटिंग भितरे and another director is being appointed तो तारा कोन special notice टा देबा पई पड़िबो, special notice of the intended appointment टा देबा पई पड़िबो. Is it clear? The newly appointed directors, देखो खाली अंडरलाइन करिके चलो. The newly appointed director has to hold the post until the duration up to the new formal appointment of the director is made. जदि ता for the time being appoint करछन हैला ना, for the time being appoint करछन से पोस्ट ता वैकेंसी कोन करिया पई फुलफिल करिया पई तो नुवा डायरेक्टर आसिले जे से कोन हैंडल करिवो सेटा. ए जे सब किछि एते इंपोर्टेंट नै, जोडा कहूची सेटा खाली करि करि चलो. When a director is removed as aforementioned, his office vacates automatically under section 167. The removed directors is liable for the damages and compensation. Please underline damages and compensation which is required to be payable to him in lieu of his removal
or termination according to the prescribed terms and conditions of the appointment. से कौन कौन देखो रिमूव डायरेक्टर्स जे भी अछंती लाइबल फॉर द डैमेजेस एंड कंपनसेशन जे भी रिमूव डायरेक्टर्स अछंती से माने कौन करिए डैमेजेस और कंपनसेशन को लाइबल हेबे रिक्वायर्ड टू बी पेबल टू हिम इन ल्यू ऑफ द रिमूवल और टर्मिनल किए दबो एडा कंपनी दबो से रिमूव्ड डायरेक्टर्स को काहेकि से माने बहुत लॉस फेस करिवे जदि सडनली से माने को रिमूव कर दो चंदी तो से माने किछि डैमेजेस आ कोन देबे माने कंपनसेशन देबे बुझी पालो. It was held that the notice must disclose the ground on which director is proposed to be removed. तो जदि जाओ जदि रिमूव कर दो चंदी तो नोटिस रे कोन दबा दरकार काहेकि रिमूव कर चंदी कोई जेमिति आमे रिजाइन करला बेलू से रीजन मागुची से रिमूव कर देले मध्ये आमे कोन मागिया रीजन टा. Under section 242 of the Companies Act, where an application has been made to the tribunal under section 241 against operation and mismanagement of company's affairs, it is important to underline for operation and mismanagement of the company's affairs माने कोन कंपनी रा अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली कैरी आउट करचंदी एली कहिगी जदी कोन किछि एप्लीकेशन आसिला कहा गुजे ट्राइब्यूनल माने इमति बुझो कि हमर जिंदी पुलिस स्टेशन कंपनी मानकर ट्राइब्यूनल से माने जदी किछि कंप्लेंट आसिला कि कंपनी रा मिसमैनेजमेंट होची फ्रॉडुलेंट मैनर रे होची द ट्राइब्यूनल में ऑर्डर फॉर termination, please underline number 1 termination or setting aside of an agreement number 2 which the company might have made with any of its directors. It may also order the removal of any director. Number 3 directly good director को remove करिया भी कोई पहले. A director so removed shall not be entitled to claim any compensation from the company. Very important mark for a point. जदि tribunal remove करछि किछले compensation पाइबोनी जदि ट्राइब्यूनल रिमूव करछि किछले कंपनसेशन पाइबनी काहेकि से फ्रॉडुलेंट मैनर रे कंडक्ट करथिला कहि कि ताको रिमूव करले ना. Additionally, such a director shall not be entitled to serve as manager, managing director or director of the company without leave of the tribunal for a period of 5 years from the date of tribunal's order terminating or setting aside his contract with the company. ए पूरा पैराग्राफ टा वेरी इंपोर्टेंट हैला कौन लास्ट बुझे भी आउथरे पे लास्ट पैराग्राफ टा चार्ट बने ना किछि डाउट अछि तारो कहि करियो मते डाउट अछि से पेन टा बारंबार काई पड़छ तो डाउट नहीं किछि कारो बुझुची लेखा tribunal's order of removal tribunal's order of removal textbook ओडी घंटी के किबा जिंस जागो हम फिल्टर आउट करी की पढुचो सेथरे ले जति पेशेंस रहले देख माडा खाइ दो माडा खाइ पूरी भितरे पूरी बेत अच्छा देखो ट्राइब्यूनल
जड़े एप्लिकेशन देजन एप्लिकेशन वॉइस ये एप्लिकेशन रबर रिलेक्स पेन दे लगते के तक कौन देजन एप्लीकेशन की कंपनी is doing some fraud, doing some fraudulent activities. Fraudulent activities. Fraudulent activities. ट्राइब्यूनल कौन करियो गोटे ऑर्डर पास करियो ऑर्डर पास करियो कौन पे कौन करियो फॉर टर्मिनेशन टर्मिनेशन माने कौन क्लोज करिया पे टर्मिनेशन और सेटिंग असाइड अग्रीमेंट सेटिंग असाइड अग्रीमेंट माने जदि गोटे पर्टिकुलर डायरेक्टर ऊपर ताको कंप्लेंट आसिला तो से कहयो कि से डायरेक्टर सहित आ तो किछ हेले कंपनी बिजनेस करिवोनी जदि पूरा पूरी कंपनी आगा फ्रॉडुलेंट करूची तो से कोन करियो पूरा पूरी क्लोज करिया पे किंदी कहयो गोटे ऑर्डर पास करी हेले देखो स्टोरी वाला लागि बे सेटिंग असाइड अग्रीमेंट विथ डायरेक्टर एबे डायरेक्टर अछि डायरेक्टर अछि हमर डायरेक्टर थिला को कोन होची ए डायरेक्टर सेड टू बी रिमूव्ड ए डायरेक्टर रिमूव हला ना पर्टिकुलरली एडी तो कोन होची पूरा पूरी कंपनी क्लोज ही होची कंपनी क्लोज ही होची बट एडी कोन होची से पर्टिकुलर डायरेक्टर जे अछि से रिमूव होची से रिमूव केले कोन हो से तीनटा पॉइंट कहै देखो सेडी फर्स्ट थिंग होची the director cannot claim any compensation cannot claim any compensation cannot claim any compensation cannot claim any compensation second point देखा he can't serve as manager देखो तीनटा पॉइंट से कहि मैनेजर managing director manager managing director manager managing director और आउडे कौन कहि सी और नॉर्मल डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी कितने वर्ष दे for 5 years from the for 5 years from the tribunal's order for 5 years from the tribunal's order बुझी पाला किछि डाउट अछि कि कारण देखो कंफर्म करो
डाउट नहीं? ठीक अच्छे देखो लास्ट पोर्शन बुझला तो मानो बुझला तो the remuneration payable to the directors of a company, including any managing or whole-time director, shall be determined in accordance with the provisions of the Companies Act, either by the articles of the company or by a resolution. तो खाली से point underline करो केमती जଣା पड़े हमको articles of the company रे mention हेको articles से नाले कौन special resolution हेकरी हेको passed by the company in general meeting, and the remuneration payable to any such directors determined as per the said provisions shall be inclusive of the remuneration payable to such director for services rendered by him in any other capacity. तो remuneration रे गोटे point से कही जी remuneration रे से कही छी directly either articles of the company रे थिबा नाले कोन special resolution at general meeting रे decide हबो special resolution at general meeting रे decide हबो a remuneration shall include the amount payable to such director the amount payable to such director for any other services provided by him provided by him माने जदि से देखो फाइनेंशियल सर्विसेज न थई गिरी जदि से आउ किछि सर्विसेज प्रोवाइड कर दो से मान मनर गुटे पेंटिंग कर दोची से कंपनी रो जहा भी गुटे एडवर्टाइजमेंट पई किबा स्लोगन्स कहि दोची कोटेशंस दोची कि ऑफर लेटर जहा भी सेकंड डिजाइन करियर से सब सर्विसेज प्रोवाइड करूची तो डायरेक्टर कैपेसिटी रे ताको जदि 50000 मिली थिबो तो एडा 5000 जदि अलग कैपेसिटी रे मिलुची तो तारा टोटल रेम्युनरेशन 55000 काउंट हबो बुझला ना आ जदि आर्टिकल्स कहि दोची कि गुटे कंपनी रे गुटे डायरेक्टर को 60000 रो अधिक दिया हबनी तो 60000 रे कोन सर्विसेज रो कॉस्ट भी से इंक्लूड करके कहूछ तो डायरेक्टर रेम्युनरेशन प्लस द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज दीडा जिंस मिसई गिरी आगा आर्टिकल्स रे मेंशन हबो बुझिला Section 1 lays down the overall maximum managerial remuneration which can be paid by a public company or a subsidiary of a public company. The total managerial remuneration payable to the directors or manager in respect of a financial year shall not exceed 11% of the net profit of the company. Maximum 11% of net profit. But sometimes a company may make no or inadequate profits in a financial year. This does not mean that its directors shall remain unpaid. In such a case, the company may, with the previous approval of the central government, pay by way of minimum remuneration any sum as may be authorized. तो से कौन कहूची 11% of the net profit जे हमें पेमेंट करि परिया जदि कंपनी को प्रॉफिट आगा हेलानी तो से कौन करियो सेंट्रल गवर्नमेंट रो अप्रूवल नबो सेंट्रल गवर्नमेंट रो अप्रूवल नेगिरी मिनिमम रेम्युनरेशन जहां भी प्रेस्क्राइब करूचंदी जदि कहियो कि 2% दियो कि 50000 दियो कि 2000 दियो कि जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करला किबा परमिट करला से अमाउंट से माने कोन करिए दे देबे It may be noted that the remuneration of the directors can be determined only by the articles of a company or by a resolution of the general body or a special resolution articles are required. तीनटा का जिंस कहूची either articles कहबो नाले कोन करिया special resolution रा जणा पड़ियो. The directors cannot themselves fix the remuneration. ताके निजे निजे कहि परियनि मते एते दरकार कइरी. A managing or whole-time director may be paid either on a monthly basis or a specified percentage of net profit. एडा important mark करो. से कौन कहूची monthly basis से पाया कि मा specified percentage of the net profit of the company or partly by one way and partly by the other. तो से कौन कहयो first 6 मास मते मास को 50000 दियो. तापरे कोन net profit रो 5% मते दियो. इन देले से कहि परियो. नले कोन totally monthly basis भी कहि परियो. नले कोन प्रॉफिट रो 2% भी कहि परियो. के कहि परियो ओनली मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर
काहेकि सेमाने होचंदी बहुत इंपोर्टेंट सबुठु ऊपर लेवल रो डायरेक्टर्स. But a managing director and whole time director is not entitled to draw more than 5%, not more than 5%, or where there is more than one such director, 10% of net profits by way of remuneration, except subject to conditions specified or with the approval of central. कौन कहूची 5% किंबा जन जन 5% रु अधिक नहीं पारियनी किंबा अधिक लोक जदि अछंती तो 10% रु अधिक नहीं पारिबेनी जदि नबर अछि सेंट्रल गवर्नमेंट रो अप्रूवल दा दरकार तो से पैराग्राफ टा इंपोर्टेंट मार्क करबो से कहि दिछि देखो खाली होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर कोन तांके कोन करि परिए मंथली बेसिस किंबा परसेंटेज बेसिस रे नहीं पारिबे बुझला out not more than 5% पर डायरेक्टर बुझला लास्ट पैराग्राफ देखो रेम्यूनरेशन रो डेफिनेशन से कौन कहछि मनी or its equivalent given or passed to any person for services rendered by him and includes perquisites माने एंती नै खाली पैसा आगा दबो से जहां भी जदी घर दोउची किबा कोन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दोउची कि खाए हो दोउची बुझिला ना जहां भी फीस बांची कि गिफ्ट बोनस वगैरह दोउची सब जिंस जागो रेम्यूनरेशन अंडर आगा पळासो including managerial the total managerial remuneration payable by a public company to its directors including MD whole time director and its manager in respect of financial year shall not exceed 11% of the net profit of the company एटा पूरी तरह एक्ट डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढिछु टोटल रेम्यूनरेशन माने समस्त डायरेक्टर्स रो रेम्यूनरेशन मिसेगिरी 11% रो अधिक होई परियनी accordingly a public company can pay remuneration to its directors including executive directors and non executive directors within the limits of 11% of net profits and the limits can only be exceeded with the prior approval of the members of the company by ordinary resolution तो से कोन कहउची लिमिट्स 11% रो अधिक नंबर अछि कहले कार परमिशन दरकार मेंबर्स परमिशन दरकार बाय व्हाट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी माने कहले कोन नॉर्मल केते परसेंटेज केते अच्छा The remuneration payable to a director shall be inclusive of the remuneration payable to him for the services rendered in other capacity. So even if a director is paid remuneration for special services apart from directorial services, such amount must be included in the total remuneration in order to ascertain the limits as prescribed. However, the only exception is when remuneration paid for professional services rendered by a director to the company without any limit is not included in the limit if the following two conditions are satisfied. The services are of professional nature and in the opinion of nomination remuneration committee, the director possesses the requisite qualification for the practice of the profession. If the company does not require to have a committee, the board can form this opinion. So, it is called good tag 9 points. Last point for today. कितने मौने और the services rendered to the company without any limit माने से जो लिमिटेशन छै कि हमको लिमिट ता कहै छी केते लिमिट कहै छी हमको 11% ऑफ नेट प्रॉफिट कहै छी तो से कहै छी ए लिमिट ता केतळ को सैटिस्फाई करियो पड़े न जान छ ना दीडा कंडीशन सैटिस्फाई हेले फर्स्ट थिंग होची जहां भी सर्विसेज से डायरेक्टर प्रोवाइड करची सेडा हमर प्रोफेशनल नेचर रो थिबार अछि सेकंड थिंग होची जदी कंपनी रो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी अछि से कमिटी जदी कहि दोची कि ए पर्टिकुलर पर्सन को कोन ए पर्टिकुलर पर्सन बहुत क्वालिफाइड तो से जदी एमती कहि दोची ठीक अछि आ बोर्ड जदी कहि दोची कि नाही ठीक अछि ए पर्सन को सेति के पैसा माने लाइक एलिजिबल ही इज सैटिस्फैक्टरी फॉर दैट अमाउंट ऑफ मनी जदी एमती कहि दोची तो से केस रे कोन से 11% रो लिमिट ता मैच करबा किबा प्रिस्क्राइब करबा पड़िबो हैना remuneration part ta jaha bhi achi seda ro chart hobo and then we'll discuss with the powers in the next class. Thank you.